Namaste all of you. Myself yoga teacher Harvi Sharma. Welcome to my YouTube channel Harvi Sharma. So today we do the practice for the forward bending. आज हम forward bending की practice करेंगे और for the work for the hamstring flexibility भी हम किस प्रकार से increase करें and forward bending की practice करेंगे. So let me start now. Sit in the comfortable position. Bring your both palm nose in front of the chest. Relax your shoulders, relax your face muscles. And little push back your spine and gently close your eyes. Deep and long inhale, गहरा लंबा श्वास and deep and long exhale. Again deep and long inhale and deep and long exhale. One more time, एक बार और deep and long inhale and deep and long exhale. Now this time deep and long inhale and one time Om chanting. Rub your both palm together. आपकी दोनों हथेलियों को रगड़े and make a heat for few seconds more and keep your both palm on the eyes. दोनों हथेलियां नेत्रों के ऊपर. Relax your eyes, relax your mind, relax your face muscles and gently open eyes. Look at the palm. Keep a smile face. So from here, sit in the Dandasana. Both legs should be straight and spine should be straight. From here, now this time आपको यहाँ से इस प्रकार से आपको लेट करके या इस प्रकार से आपको सामने की तरफ फॉरवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस करना है. 1 2 3 4 5 and 6 and from here now this time keep your both legs straight. दोनों पैर आपको सामने की तरफ बट फ्लेक्स और फीट आपके टोज इनसाइड आपको फ्लेक्स करना है. फ्रॉम हियर बोथ हैंड्स अप. यहाँ से आपकी टम्मी को इनसाइड, बोथ आर्म्स शुड बी स्ट्रेट. आपके बाइसेप्स आपके कान को टच करेंगे एंड लुक फ्रंट साइड. स्प्रेड योर फिंगर्स, सक योर बेली इन. आपकी टम्मी को इनसाइड एंड स्टे. 1 2 3 4 5 and 6. Exhale and relax. Now this time again both legs should be straight. दोनों पैर बिल्कुल सीधे होंगे आपके and flex your feet. आपके फीटों को आगे की तरफ नहीं, इनसाइड आपको फ्लेक्स करना है. अगेन स्पाइन आपकी इरेक्ट रखना है. बोथ आर्म स्ट्रेट. सक योर बेली इन. आपकी टमी को इनसाइड एंड spread your fingers. Elbow should be straight and biceps should be touch your ear and breathing. 1 2 3 4 5 and 6. Exhale and relax. So now this time अभी हम राइट लेग को फोल्ड करेंगे here and यहाँ से you can keep your right leg inside of the left thigh. आपकी बाई थाई की बगल में. From here, flex your left leg. Again, both hands up. दोनों हाथ ऊपर की तरफ. From here, lengthen your spine. आपकी स्पाइन को यहाँ से लंबा करना है and stay. यहाँ से आपकी कमर को लंबा करते हुए आपको आगे की तरफ झुकना है. Here you can see me. Both hands up and stay there. Only stay. 1 breathing. 2 3 4 5 and 6. Good. Come back. Inhale, exhale, bend, relax. Now this time again change the sequence. यहाँ पर now this time keep your right leg straight. आपके दाहिने पैर को सीधा रखना है and keep your left leg inside. आपके left leg को इस तरफ and flex your right leg. Again both hands up. दोनों हाथ ऊपर की तरफ. From here lengthen your spine, lengthen your arms and exhale and stay there. 1 2 3 4 5
and 6. Exhale and come back. So one more time, again 8 बार और keep your left leg straight and keep your right leg inside. From here both hands up, suck your belly in, spine should be lengthened. From here keep charge your tailbone. आपकी कमर को यहाँ से hunch नहीं करना इस प्रकार से. Again you can see inhale and keep charge your tailbone, lengthen your spine and try to go down maximum. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Exhale and relax. Now this time change your legs. इस बार आपके राइट लेग को सामने की तरफ and flex your feet and keep your left leg inside. बायां पैर आपका अंदर की तरफ. From here both hands up, दोनों हाथ ऊपर की तरफ. Inhale and exhale. Keep charge your tailbone. Arms should be straight and look front side. Breathing. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Exhale and relax. So now I will show you another sequence. Again keep your left leg straight. आपके लेफ्ट लेग को सीधा रखना है. Keep your right leg inside. If again both hands up, suck your belly in, lengthen your spine. Arms should be straight. Inhale and exhale and hold your big toe. आपकी toes को यहाँ से पकड़ना है. Only here. If you are not able to hold there, you can use the step. आप step use कर सकते हैं इस प्रकार से. But make sure your spine should be straight. Here, look front side. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good, come back. Inhale, exhale, then relax. Now this time change the legs. Again, दाहिना पैर पूरा सीधा सामने की तरफ and flex your right leg. And if you are not able to hold the toes, then you can use the steps here. But make sure keep charge your tailbone. आपकी कमर को ऐसे रोल नहीं करना है. It should be lengthened and look front side. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good, come back. Inhale, exhale, then relax. Now this time one more time, एक बार और. Keep your left leg straight, flex your feet and right leg inside. And now this time again both hands up, suck your belly in and hold your toe. And breathing. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Exhale and come back. Now this time again one more time, right leg straight, flex your feet inside and keep your left leg with the right thigh. And from here both hands up, suck your belly in, lengthen your spine and hold your big toe. And breathing. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good, come back. Inhale, exhale, then relax. Now this time I will show you other sequence. Keep your left leg front side. आपका बायां पैर सामने की तरफ and keep your right leg again inside. And from here both hands up, suck your belly in. इस बार आपको बहुत और आगे की तरफ बेंड नहीं करना. Inhale and exhale. Now this time try to touch your belly और आपकी इंटेस्टाइन, आपकी जो भी आपकी चेस्ट है, आपका स्टमक है, ये आपकी थाइज के ऊपर आना चाहिए. फ्रॉम हियर इनहेल, लेंथन स्पाइन एंड होल्ड योर बिग टो and drop your elbows. But when you drop your elbows, your shoulder should be aligned. आपका शोल्डर आगे पीछे नहीं जाएगा. It should be aligned. आपका जो भी शोल्डर पीछे है, आप इस प्रकार से ड्रॉप करते हैं तो आपका दाहिना कंधा पीछे रहता है. दाहिने शोल्डर को आपको सामने की तरफ फ्लेक्स करना है, आगे की तरफ खींचना है. एंड स्टे देयर. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Good, come back. Inhale, exhale, then relax. Now this time change the legs. Right leg straight, flex your feet and keep your left leg inside, both hands up. Inhale
और आपका टमी और आपका इंटेस्टाइन, आपका पूरा छाती आपके थाइज के ऊपर आना चाहिए। इनहेल एंड एक्सेल, इस प्रकार से होल्ड योर बिग टो एंड कीप चार्ज योर टेलबोन एंड यू कैन ड्रॉप योर एल्बोस हियर, बट अलाइन योर शोल्डर, आपके शोल्डर को बराबर करना है एंड स्टे देयर। 1 2 3 4 5 and 6, both hands up and come back. So now this time again one more time, keep your left leg straight, flex your feet, right leg inside, both hands up and hold and repeat. Breathing, align shoulders, drop your elbow, look front side. 1 2 3 4 5 and 6, both hands up and come back. Now this time again, right leg straight, flex your feet, keep your left leg inside, both hands up, inhale and bend forward, suck your belly in, keep charge your tailbone, breathing and look front side, align your shoulders and drop your elbow. 1 2 3 4 5 and 6, good, come back, inhale, exhale, then relax. Now this time again, अभी हम दोनों पैर सामने की तरफ एंड फ्लेक्स योर फीट, बोथ हैंड्स अप, दोनों हाथ ऊपर की तरफ, फ्रॉम हियर इनहेल, सक योर बेली इन, फ्लेक्स योर फीट एंड होल्ड योर बिग टो। आपकी दोनों टोज को पकड़ना है, बट आपकी स्टमक एंड बेली शुड टच योर थाई, आपकी थाई को टच करना है एंड कीप चार्ज योर टेलबोन, आपकी टेलबोन को चार्ज करना है, आपकी स्पाइन को इस प्रकार से हंस नहीं करना है। अगेन यू कैन सी मी, बोथ लेग्स शुड बी स्ट्रेट, फ्लेक्स योर फीट, both hands up, suck your belly in, आपकी टमी को इनसाइड आपको फ्लेक्स करना है। इनहेल, lengthen your spine, lengthen your arms and hold your big toe and drop your belly on the thighs and elbow drop and look up. 1 2 3 4 5 and 6, good, come back, inhale, exhale, then relax. Now this time again repetition, one more time, both hands up, दोनों हाथ, both hands up, दोनों हाथ पूरा ऊपर की तरफ and suck your belly in, lengthen your spine and drop your elbow and go down. 1 2 3 4 5 and 6, good, come back again, flex your feet, both hands up, inhale and bend forward, hold your big toe and try to touch your head, breathing. 1 2 3 4 5 6 and good, and come back, inhale again, both hands up, one more time, inhale, exhale, lengthen your spine, hold your big toe and try to touch your head, breathing. 1 2 3 4, good, come back, inhale, exhale, then relax. So guys, this is the sequence for the forward bending, and you can increase the flexibility for the spine and the hamstring. So I hope you can understand easily and you can do it, and wait for my next video. Special request to all of you, if you are new on this channel, please subscribe my channel and also like, share and comment and press the bell icon button, and wait for my next video. Hariom all of you.